Hello everyone, very good evening to all of you. I, Anupama, welcome you all back again at the SAAVAL classes. So today, in this lecture, we are going to discuss the previous year question paper of Master Cadre English of the year 2021. ठीक है जी, 2021 जो दिसंबर में हुआ था एग्जाम, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस के साथ from that question paper of 2021. हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. What figure of speech is phrased bed of roses in this above sentence? हाँ जी, yes, bed of roses is a metaphor. Very good, very right everyone. What is a figure of speech called where a part represents the whole? So, where a part represents the whole, that is called synecdoche. Okay? जहां पे part represent करता है whole को, जैसे हम hands कह दें labor को, ठीक है, जैसे हम hands कह दें labor को, जैसे हम wheels कह दें कार को, ठीक है, I bought my new wheels. So that is synecdoche. Question number 3. What is the literary term for occurrence of the same sound at the beginning of adjacent words? हाँ जी, तो literary term for the occurrence of the same sound at the beginning of adjacent words. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन इन्होंने ना थोड़ा सा जो है एम्बिगुअस दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा कि वो साउंड कौन सी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है बच्चे, क्योंकि सेम साउंड वाउल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है ना. सेम साउंड वाउल भी हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, नो डाउट. एडजेसेंट मतलब साथ लगने वाले, ठीक है, बेसिकली. लेकिन क्या है कि वाउल जो है वो वर्ड के मिडल में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, ठीक है. हाँ जी जी, संयम, मैं वही बात कर रही हूँ, ठीक है. लेकिन बेसिकली अगर हम वाउल को देख के चलते हैं, तो वाउल जो है वो वर्ड के बिगिनिंग में भी आ सकता है, मिडल में भी आ सकता है, और एंड में भी आ सकता है, ठीक है जी. तो इसलिए हम बेसिकली लेके चलते हैं एलिट्रेशन को, ठीक है, बेसिकली लेके चलते हैं एलिट्रेशन को. What is comical, satirical exaggeration of certain striking characteristics of a person called? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए मैंने एलिट्रेशन मार्क किया ना बच्चे, इसीलिए मैंने एलिट्रेशन मार्क किया है जी. चलिए, तो what is comical, satirical exaggeration of certain striking features of a person called? Yes, that is called caricature. ठीक है, lampoon is a little bit different from it. लैम्पून जो है उससे डिफरेंट होता है. लैम्पून में बेसिकली मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, लैम्पून में बेसिकली जो है क्रिटिसिज्म करी जाती है या रिडिक्यूल किया जाता है, ठीक है. लेकिन जब ये आ जाए ना कॉमिक, कॉमिक मतलब कार्टून की तरह, ठीक है बच्चे, रिफ्रेन में लाइंस रिपीट होती हैं, रिफ्रेन में लाइंस रिपीट होती हैं, ठीक है. लैम्पून, कैरिकेचर, जब उन्होंने कहा ना कॉमिक और स्टेरिकल एग्जैजरेशन, दैट इज कार्टून, मतलब जो कार्टून के जैसा हो किसी पर्सन का, उसको कैरिकेचर कहते हैं, ठीक है. और अगर हम कहें द एक्टर वॉज lampooned बाय द प्रेस, ये मजाक उड़ाना. लैम्पून का बेसिकली मतलब होता है मजाक उड़ाना, ठीक है जी. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5. What does term pathetic fallacy mean? So pathetic fallacy mean assigning human emotions to inanimate world. बिल्कुल सही एक था, जैसे न्यूज़पेपर्स में आते थे ना पॉलिटिशियंस के, ठीक है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 6.
Which of the following is not true of epic yarner? हाँ जी, इनमें से कौन सी चीज जो है एपिक के बारे में सही नहीं है? So it is stage presentation. Okay, it is stage presentation. G. Question number 7. According to the phrase structure rules, John in the sentence John with the ball is represented as noun phrase. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं that will be noun phrase and verb phrase. ठीक है, पहले जो हम एनालिसिस करते हैं that comes according to noun phrase and verb phrase. What of the following is true about sociolinguistics? हाँ जी, इनमें से कौन सी बात sociolinguistics से रिलेटेड है? So it deals with effect of society on language use. Okay, it deals with effect of society on language use. Yes. What is dialect? So dialect is a variety of language typically of one region. Okay, it is dialect, it is language of one region, right? What does accent refer to? Yes, what does accent refer to? It is the way one pronounces the words. ठीक है जी, accent होता है जिस तरीके से मैं बार बार एक ही चीज कहती आई हूं, that accent is related to pronunciation. ठीक है, तो बिना कंफ्यूज हुए जिस भी किसी सेंटेंस में प्रोनाउंसिएशन की बात हो तो that will be accent. All right, question number 11. Question number 11. हाँ जी, what does term register mean in social linguistics? हाँ जी, so register means a variety of language used for a particular purpose, right? A variety of language used for a particular purpose. हाँ जी, which is the most flexible organ of speech? हाँ जी, इनमें से most flexible organ of speech कौन सा आ जाता है? तो उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, it is tongue. Yes. What are the sounds produced with both lips called? When we use both the lips, those sounds are called bilabial sounds. है ना, those sounds are called bilabial sounds, right? How many diphthongs are there in English? How many diphthongs are there in English? So there are total 8 diphthongs. Very, very right, everyone. Yes, and we know the answer. That is very, very easy. There are total 8 diphthongs. Question number 15. What is the total number of consonant phonemes in English? Consonants कितने होते हैं total? So there are total 24 consonants. All right, there are total 24 consonants in English. How is the vowel phoneme in the word seen described? seen की ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है स, बड़ी ई और न, तो वाउल, वाउल की डिस्क्रिप्शन आपको देनी है. तो इट इज फ्रंट क्लोज अनराउंडेड. ठीक है जी, फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वाउल आ जाता है ये. ठीक है, फ्रंट में है, टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑफ द माउथ. ठीक है, एंड अनराउंडेड. ऑलराइट, सो इट इज front close unrounded. G. Which of the following is bilabial voiceless plosive phoneme? Bilabial भी है, voiceless भी है और plosive भी है. ठीक है, so the right answer is A. ठीक है, bilabial, plosive and voiceless सारा होना चाहिए. ठीक है, question number, when our lips don't get rounded, जब हमारे लिप्स राउंड नहीं होते, दे आर अनराउंडेड. ऑलराइट, हाउ मेनी एफ्रिकेट फोनीम्स आर देयर इन इंग्लिश? वेरी इजी वन, देयर आर ओनली 2, ट एंड ज. राइट, हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 19. हाउ इज द फाइनल फोनीम इन द इंग्लिश वर्ड सिंग डिस्क्राइब? ट्रांसक्रिप्शन हम इसकी करेंगे सिंग. हाँ जी, तो अंग, इसकी हमें सिर्फ अंग की जो है डिस्क्रिप्शन बतानी है. तो इट इज वॉइस्ड हीलर प्लोजिव. राइट, यस, इट्स वॉइस्ड हीलर प्लोजिव. Which vowel
phoneme is called schwa in phonetics. हाँ जी, schwa हम किसे कहते हैं? तो it is the mid central vowel in vowel chart. It is the mid central vowel in vowel chart. G. Question number 21. What does term pulmonic egressive airstream mean in description of sound? So pulmonic egressive airstream means strong air coming out of the lungs, right? It means air coming out of the lungs. What for the following is not true of a sign in semiotics? इनमें से कौन सी चीज जो है सेमियोटिक्स साइन को लेके जो है करेक्ट नहीं है? यस, इट इज द ऑड वन आउट इज इट इज लॉजिकल. ठीक है, ये आर्बिट्रेरी होता है. ठीक है, साइन जो है आर्बिट्रेरी होता है, लॉजिकल नहीं होता है. ठीक है, आर्बिट्रेरी होता है, लॉजिकल नहीं होता है. ठीक है जी. और डायडिक का मीनिंग क्या होता है? हाँ जी, अब इस वर्ड डायडिक का क्या मीनिंग होता है? इट मीन्स डायडिक का मतलब होता है कि जैसे हम एलोफोन्स, ठीक है, कि एक जो फोनीम है उसकी दो साउंड्स भी आ सकती हैं. ये एक जो साउंड है उसकी दो साउंड्स भी आ सकती हैं. ठीक है, यस. और उसके मतलब दो पार्ट्स. यस, वेरी गुड. उसके दो पार्ट्स हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड. वेरी राइट, उसके दो पार्ट्स हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड. जी. क्वेश्चन नंबर 23. हाँ जी. After which of the following is the place of articulation for description and classification of consonant phoneme named? हाँ जी, place of articulation. जब हम बात करते हैं कि ये साउंड्स बाइलेबियल हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं ये साउंड्स डेंटल हैं, तो उनका नाम कहाँ से आता है? उनका नाम कहाँ से आता है? उनका नाम आता है फ्रॉम पैसिव आर्टिकुलेटर्स. बच्चे, पैसिव आर्टिकुलेटर से आता है. देखो, एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है? अकेली हमारी टंग. ठीक है, एक्टिव आर्टिकुलेटर कौन सा है? पर यस, दे आर बोथ. जी जी, क्योंकि बाइलेबियल में जी, राइट राइट, इट इज बोथ. नो नो नो, इट इज बोथ. हाँ जी, क्योंकि बाइलेबियल में हमारे दोनों लिप्स मूव करते हैं, राइट. पर मैक्सिमम मैक्सिमम जो हमारी साउंड्स है वहां पे पैसिव आर्टिकुलेटर्स के अकॉर्डिंग नाम है. ठीक है, चलो. व्हाट इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट स्टडीज द वर्ड्स एंड द रूल्स ऑफ देयर फॉर्मेशन? सो स्टडी ऑफ वर्ड और रूल फॉर्मेशन किसमें आता है? मॉर्फोलॉजी के अंडर. जी, इट कम्स अंडर मॉर्फोलॉजी. इन विच कैटेगरी ऑफ मॉर्फीम्स डू द प्रीफिक्सेस फॉल? तो प्रीफिक्सेस मॉर्फीम्स की किस कैटेगरी में आ जाते हैं? बच्चे, एक्टिव ऑर्गन्स वो होते हैं, एक्टिव ऑर्गन्स सिर्फ वो होते हैं जैसे टंग या हमारे लिप्स. ठीक है, पैसिव आर्टिकुलेटर्स मेरे अकॉर्डिंग तो पैसिव आर्टिकुलेटर ही बनता है. मैं एग्जैक्टली बता रही हूं, मेरे अकॉर्डिंग तो पैसिव आर्टिकुलेटर ही बनता है. अब आप देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. डेंटल में थ द, ठीक है, थ द, यहाँ पे क्या हो रहा है? द टंग टचेस द टीथ. ठीक है, टंग हमारी एक्टिव है, टंग हमारी एक्टिव है, टीथ हमारे पैसिव हैं, अपर टीथ हमारे पैसिव हैं, है ना, अपर टीथ हमारा पैसिव है. तो डेंटल टीथ इट इज पैसिव. ठीक है, बट हाँ, दूसरा आ जाता है हमारा लेबियो डेंटल. जी जी जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ लेबियो डेंटल.
लेबियोडेंटल में हमारा लोअर लिप मूव करता है, ठीक है, हमारा लोअर लिप कम्स क्लोज टू द अपर टीथ, ठीक है, तो दोनों आ जाएंगे, राइट राइट, तो दोनों आ जाएंगे, ठीक है, चलिए, हाँ जी, सो प्रीफिक्सेस किसके अंडर आ जाते हैं, दे कम अंडर द बाउंड मॉर्फीम्स, राइट, प्रीफिक्सेस कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बाउंड मॉर्फीम्स. Which is the branch of linguistics that deals with the mental aspects of language? Mental aspects of language के साथ कौन सी linguistics की branch deal करती है? So that is psycholinguistics, right? Give three-term description of the first phoneme in English word sip. स की, मतलब हमें स की जो है थ्री टर्म डिस्क्रिप्शन देनी है. तो स is voiceless alveolar fricative, right? So is voiceless alveolar fricative. G. Question number 28. What is the position of vocal folds, vocal cords while producing voiced sounds? So our vocal cords are held loosely together, right? They are held loosely together when the voiced sounds are produced, right? Which of the following is distinctive requirement for articulation of a consonant sound? क्या चीज सबसे जरूरी, डिस्टिंक्टिव रिक्वायरमेंट मतलब सबसे अलग रिक्वायरमेंट कौन सी होनी चाहिए ड्यूरिंग द पार्टिकुलेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट? इट इज कंप्लीट और partial closure of air passage. Yes, it is complete or partial closure of air passage. Question number 30. What is the tongue shape and position of lower jaw during the articulation of the monophthongs? Yes, tongue की हमारी क्या shape होती है और lower jaw की क्या position होती है during the articulation of the monophthongs? Yes, so the tongue shape and the lower jaw remains relatively unchanging. Yes, it remains relatively unchanging. What is the significant feature of plosive consonants? हाँ जी, plosive consonants की significant feature क्या होती है? Complete closure and sudden release, right? Complete closure and sudden release. All right? बच्चे diphthongs में भी same ही होता है. diphthongs में भी tongue shape नहीं change होती, लोअर जॉ जरूर मूव करता है, ठीक है, लोअर जॉ थोड़ा सा मूव करता है. ए, ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 32. हाँ जी, which of the following novels is written by R.K. Narayan? इनमें से कौन सा नॉवल R.K. Narayan का है? So very famous one, it is The Guide, जिसपे हमने पिछले पेपर में करा कि मूवी भी बनी थी जी. Who is the central character in the novel Kanthapura? So the central character in the novel Kanthapura is Murthy. 30th क्वेश्चन में क्या चीज डाउट है बच्चे? टंग शेप. देखो, अगर हम ई बोल रहे हैं, अगर हम ई बोल रहे हैं, अगर हम ऊ बोल रहे हैं, तो क्या हमारी टंग फोल्ड हो रही है कहीं पे भी? हमारा जॉ हिल रहा है, लोअर जॉ, ई, ऊ, ओ, औ, है ना? डिप्थोंग्स में लोअर जॉ फिर भी मूव करता है, ए, ओ, औ, ठीक है, डिप्थोंग्स में लोअर जॉ फिर भी मूव करता है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स मोनोफथोंग्स में, वाउल्स में इट्स रिलेटिवली अनचेंजिंग, मतलब अगर चेंज होता है दैट इज वेरी माइनर चेंज. बट बच्चे, टंग शेप, is it getting folded? Is it getting folded? No, it is not getting folded. ठीक है, तो अपर जॉ में भी रिलेटिवली अनचेंजिंग से मतलब है बच्चे माइनर चेंजेस. अगर वो चेंज आते भी हैं तो वो नाम मात्र चेंज होते हैं, ठीक है.
D. Question number 34. Which of the following novels won the Booker Prize? किस नॉवल को बुकर प्राइज मिला था? The God of Small Things को. ठीक है जी? God of Small Things को. Question number 35. In which novel Manu Majra is a fictional border village? Again, same ऐसे questions कि आपको जो है ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है. It appears in Train to Pakistan. Which novel by Mulk Raj Anand has Bakha the Sweeper as the central character? D. टंग मूव होती है, बट बच्चे शेप से हमारा मतलब है कि टंग घूमती तो नहीं है ना, टंग ऐसे ऊपर तो नहीं जा रही ना, कहीं पे किसी ऑर्गन को टच नहीं कर रही ना. Yes, it is the untouchable. Very right. It's the untouchable. Who is the author of The Golden Threshold, a collection of poems? So the Golden Threshold is Sarojini Naidu. G. It's Sarojini Naidu. Which of the following works is written by Rabindranath Tagore? Oh my God. So हमें पता है it is गीतांजलि जिसके लिए उन्हें Nobel Prize भी मिला. When was the novel Kanthapura written? So Kanthapura was written before independence, है ना? It was written in 1938. Yes. So before independence, right? Who is the author of Train to Pakistan? So Train to Pakistan के writer हैं खुशवंत सिंह. In which language did A.K. Ramanujan write poetry? So A.K. Ramanujan wrote in English and Kannada. ठीक है जी, A.K. Ramanujan किस लैंग्वेज में लिखते थे? English और Kannada. Who is the writer of the poem A River and of Mothers Among the Others? So A River of Mothers Among the Others के writer हैं A.K. Ramanujan. Yes, it's A.K. Ramanujan. Question number 43. In which novel Raju and Rosie are the main characters? So Raju and Rosie are the main characters in the novel The Guide. Which of the following novels is written by Anita Desai? So that is Cry the Peacock. Anita Desai is the writer of Cry the Peacock. Which of the following authors is known for his jokes? So that is Khushwant Singh, right? Khushwant Singh is known for his jokes. All right. For which of the following works did Rabindranath Tagore get a Nobel Prize for Literature? जी, संता बंता वाले जो जोक्स हैं वो खुशवंत सिंह ने क्रिएट किए थे. ठीक है जी. So yes, that is Gitanjali. Very right. Who is the writer of the novel The Hungry Tide? The writer of the novel The Hungry Tide is Amitav Ghosh. Right? It's Amitav Ghosh. क्वेश्चन नंबर 48. यहाँ पे अब आपको जो है मैच द कॉलम करने हैं. तो ट्रेन टू पाकिस्तान का कैरेक्टर है जुगत सिंह, कांतापुरा का कैरेक्टर है मूर्ति, गाइड का कैरेक्टर है राजू और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का कैरेक्टर है अमू. सो द राइट वन इज ए ऑप्शन. यस. क्वेश्चन नंबर 49. अगेन मैच द फॉलोइंग. खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, Raja Rao, Kanthapura, R.K. Narayan, The Guide, and Mulk Raj Anand, Coolie. So the right option is B. Yes, it's B. Question number 50. What is the name given to the period from 1558 to 1603? So 1558 to 1603 in English literature is called the Elizabethan age, right? It's the Elizabethan age. Which of the following plays is written by Christopher Marlowe? So that play is Dr. Faustus. G. Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe. Question number 52. In which year did Shakespeare die? In which year did Shakespeare die? Shakespeare died in 1616. Right answer. In which Shakespearean play Brutus and Mark Antony are main characters? So Brutus and Mark Antony make their appearance in Julius Caesar. Very, very right.
Who is the writer of the Fairy Queen? So the writer of the Fairy Queen is Edmund Spenser. To whose reign Jacobean period refers? Who was the ruler during the Jacobean period? It was James I. G. It was James I. Which time period does Jacobean era in English literature refer to? So English literature में Jacobean era जो है refers to 1603 to 1625. All right, 1602. ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਵੀ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਜੀ which of the following poems is not written by John Donne इनमें से कौन सी पोएम जॉन टन की नहीं है सो इट इज मैक फ्लैकनो बिकॉज मैक फ्लैकनो इज रिटन बाय ड्राइडन जी क्वेश्चन नंबर 58 हु हैज रिटन पैराडाइज रीगेन्ड नहीं जसप्रीत मैं मजाक कर रही हूं बच्चे मैनू पता इतना नहीं हो सकता पर थोड़ा पेपर बहुत वधिया आऊगा ठीक है दिस इज माय ट्रस्ट ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਊਗਾ एक्चुअली कौर एक्चुअली क्योंकि तुसी इतना कुछ प्रिपेयर कर लिया बच्चे मैं पूरी कोशिश की है अमरजीत मैं पूरी कोशिश की है बच्चे कि मैं कोई कसर मेरे तो ना रह जाए बस ते हुण एक जिहड़ी चीज मैं कर रही हां ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ ठीक है ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਦੁਆ चलो जी Who has written Paradise Regained? So, Paradise Regained is written by John Milton. Yes, it is written by John Milton. For the poetic technique, which poet the term conceit is usually used? Hanji, which poet uses the term conceit? All the best to all of you. I just wish that you all get settled in your lives, in your careers. That is why what I wish for all of you all the time. My wishes are with you all the time. Yes. So it is used by John Donne. Yes, it is used by John Donne. How is the poem Absalom and Achitophel best described? So Absalom and Achitophel, it's an allegorical satire. All right. Question number 61. Which of the following plays is written by Ben Jonson? I'm absolutely fine. I'm absolutely fine. Don't worry, I'm fine. I know that.
आई नो दैट, बिल्कुल आप सब क्लियर करोगे एग्जाम, आप सब क्लियर करोगे. यस. ऑल राइट. क्वेश्चन नंबर 61. So which of the following plays is written by Ben Jonson? And we all know that again. Yes, it is Every Man in His Humor. G. It is Every Man in His Humor. Yes, I know, Jashan, you all will make me feel proud. I know that. You all will make me feel proud. Definitely. Definitely. Which poem of John Donne begins with the line, busy old fool, unruly son? So, these, this line is taken from John Donne's poem, The Sun Rising. Yes. फटाफट से question solve करो. See, yes, I am happy, Geetu. I am smiling. खुशी के आंसू थे. With which dramatist the term comedy of humors is associated? So, comedy of humors is associated with none other than Ben Jonson. Yes, it is Ben Jonson. In which poem does John Donne compare an insect to a temple of love? Hanji. So, John Donne compares an insect to a temple of love. This happens in the poem The Flea. Yes, it happens in the poem The Flea. Who is the writer of Sonnet on his blindness? So again, very, very easy question. On his blindness is written by, on his blindness is written by, it is written by Milton. Yes, very right. Question number 66. Who declares in Paradise Lost, better to reign in hell than to serve in heaven? And it is none other than better to reign in hell than to serve in heaven. The statement is made by Saturn. G. Milton's Paradise Lost is a. So, what is the genre of Milton's Paradise Lost? That is an epic. Yes, it's an epic. Restoration period begins with the crowning of. Restoration period में किसकी coronation हुई थी? It is Charles II. Yes, it is Charles II. Theatre remains banned in England for 12 years from 1648 to 1660. ठीक है, 1648 आ जाए या 49 आ जाए, ठीक है, 48 आ जाए या 49 आ जाए, it will be correct. Match the following authors with their work. So Milton is the writer of Lycidas. Ben Jonson, Dr. Faustus, Dryden, Absalom and Achitophel, or Marlowe is, oh sorry, Ben Jonson is Walpole, Dryden is Absalom and Achitophel, and Marlowe is Dr. Faustus. Yes, it is 4132. G. बच्चे आई थिंक कैननाइजेशन लिखी थी, कैननाइजेशन जसप्रीत. क्यों? मिल्टन का लिसिडस है, बेन जॉनसन का वॉलपोन है, ड्राइडन का अब्सैलम एंड कीटोफिल है, और मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है. 4132. बच्चे प्रॉपरली बैंड, ठीक है, 1642 से स्टार्ट हो गया था, 1642 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है. ओ यस यस, फॉरबिडिंग वैलिडिक्शन. जी जी, थैंक यू प्री, थैंक यू. Valediction forbidding mourning, right? हाँ जी. Match the following texts and characters. ठीक है जसप्रीत. Valediction forbidding mourning जो है डेडिकेट करी थी उसने अपनी वाइफ को. तो पैराडाइज लॉस्ट में कैरेक्टर है सैटर्न, वॉलपोन में कैरेक्टर है मॉस्का, जूलियस सीजर में है मार्क एंटनी, और किंग लियर में है कोर्डिलिया. The right one is 2143, right? 2143. D. Question number 72.
Which of the following authors belong to the Augustan age? So the writers belonging to the Augustan age is, that is, Alexander Pope and बट रूपाली फिर मैंने मना कर दिया था बच्चे, वो बहुत रिस्की काम है। नहीं काजल, मैं पढ़ाते हुए और एनर्जेटिक हो जाती हूँ। यस, इट इज अलेक्जेंडर पोप एंड सैमुअल रिचर्डसन। Which of the following is the most distinctive feature of Augustan age in the English literature? हाँ जी, Augustan age की क्या distinctive feature थी? Satire, right? Satires लिखे जाने शुरू हो गए थे Augustan age में, फिर चाहे वो ड्राइडन ने लिखे, पोप ने लिखे, स्विफ्ट ने लिखे। ठीक है जी। Name of the heroine of the Rape of the Lock is, yes. So the Rape of the Lock is written by heroine of the Rape of the Lock is Belinda, ठीक है। और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? रियल कैरेक्टर एराबेला फर्मर को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, रियल कैरेक्टर एराबेला फर्मर। The poem The Rape of the Lock is written by, oh my god, it is written by Alexander Pope. All right. Rape of the Lock is written by Alexander Pope. Question number 76. Gulliver's Travels is written by. So who is the writer of the Gulliver's Travels? A very, very famous novel. It is Jonathan Swift. Hanji. Again, you have to match the following authors and their texts. Joseph Edison was related to the Spectator. Alexander Pope, Rape of the Lock. Jonathan Swift, Gulliver's Travel, and Samuel Richardson, Pamela. So the right option is 2413, right? So the right sequence is 2413. G. Question number 78. नॉवल पैमेला इज रिटन बाय, देखो ऊपर भी बता दिया और फिर नीचे वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है ना, पेपर थोड़ी है ये। सो इट इज रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन। जी, इट इज रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन। Thank you so much, Rajvinder. Thank you for all the love, for the respect, and my blessings are with you always. And thank you for your wishes. All the best to you for your exam. Anji, which of the following is a mock epic poem? So it is Rape of the Lock. Anji, it is Rape of the Lock. What is distinctive of an epistolary novel? Anji, so what is distinctive? But it is an epic. It is just an epic, right? Yes, it is. It consists of letters. G. It consists of letters. बच्चे सोनेट होती है 14 लाइंस की पोयम, ओड होती है अ पोयम रिटन इन समबडीज प्रेज। ये एक एक लाइन याद करो बस। सोनेट होती है पोयम ऑफ 14 लाइंस, ओड होती है पोयम रिटन इन समबडीज प्रेज, और लिरिक होती है एक पोयम विच इज संग, विच कैन बी संग, जो गाई जा सकती है। टॉम जोन्स इज अ नॉवल रिटन बाय, yes, it is written by Henry Fielding. Very, very right. The writer of Joseph Andrews. Sophia Weston, Tom, and Squire Allworthy are all the characters in. देखो ऊपर भी उसी से related question पूछ लिया, यहाँ पे भी. So they are the characters in Tom Jones by Henry Fielding. Right? They are the characters in Tom Jones. Question number 83. The Picaro, the main character in a Picaro's novel is a clever villain. Sorry, it's a lovable rogue. रोग होता है बहरूपिया, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं करता वो, किसी को परेशान नहीं करता वो, ठीक है, देश बदल बदल के इधर से उधर घूमता है, ठीक है, सो ही इज अ लवेबल रोग। रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश रेफर्स टू, सो रोमांटिक पीरियड जो है स्टार्ट होता है 1798 में, ठीक है, देखो इट्स एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, right? It's end of the 18th century, right?
So it's early 19th century. जी, it's early 19th century. क्योंकि 98 2 साल तो रह गए 18th सेंचुरी को खत्म होने में, है ना? 2 साल रह गए 18th सेंचुरी को खत्म होने में, उसको नहीं कंसिडर करेंगे। 18th सेंचुरी वैसे ही नहीं है, ठीक है? 2 साल रह गए 18th सेंचुरी को कंसिडर खत्म होने में, so it is early 19th century, right? Question number 85. Songs of Innocence and Experience is written by, बच्चे अपलोड हो गई है ऐप में, अपलोड हो गई है ऐप में प्री, yes it is William Blake, yes it is William Blake. Kubla Khan is a famous poem written by, so who is the writer of Kubla Khan? It is Samuel Taylor Coleridge. It is Samuel Taylor Coleridge. Lucy Gray is a poem written by, कौन से राइटर लूसी पोएम्स के लिए जाने जाते हैं? It is William Wordsworth. ठीक है जी, it is William Wordsworth. Yes. Question number 88. Question number 88. So, lyrical ballads is a collection of poems written by William Wordsworth and Coleridge. मुझे लगता है आंखें बंद करके भी टिक करेंगे ना तो भी सही होंगे ये. A thing of beauty is a joy forever is a poetic line written by John Keats, and it is the beginning line of the poem Endymion. Right? It's the beginning line of the poem Endymion. Question number 90. Which of the following poets was an opium addict? So it was Coleridge, right? It was Coleridge, opium addict. Which of the following novels is not written by Jane Austen? So the odd one out is Ivanhoe. Hanji Anita Hanji. मिल जाएंगी आपको. It is Walter Scott. Yes, it is Walter Scott. Question number 92. Sir Walter Scott is known for, Walter Scott is known for historical romances. All right. Walter Scott is known for historical romances. Again, you have to match the following. Wordsworth की poem इसमें आ जाती है Tintin Abbey. Lord Byron की आ जाती है Don Juan. John Keats की आ जाती है Ode to Autumn. और P.B. Shelley की आ जाती है Ode to the West Wind. So the right series is 1, 4, 2, 3. Right? It is 1, 4, 2, 3. B. Which of the following works is not written by Lord Byron? So the odd one out is Frankenstein, because Frankenstein की writer कौन थी? Mary Shelley. See, it's Mary Shelley. Question number 95. The Elegy Adonis is written by, who is the writer of the Elegy Adonis? It is by P.B. Shelley, which was written on the death of John Keats, right? Written on the death of John Keats. If winter comes, can spring be far behind? This line is written by P.B. Shelley, taken from Ode to the West Wind, right? It's taken from Ode to the West Wind. Yes. The novel The Monk is written by, so the Monk के writer कौन है? It is M.G. Lewis, right? It's Matthew Gregory Lewis. अबू बेन एडम, देखो पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने कहा था क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, यही क्वेश्चन थोड़े ना रिपीट हो जाएंगे. लुक एट दिस, लुक एट दिस. अबू बेन एडम इज अ पोएम रिटन बाय ली हंट, राइट? क्वेश्चन नंबर 99. Mary Wollstonecraft is mainly regarded as a pioneer feminist philosopher. G. Mary Wollstonecraft is mainly regarded as a pioneer feminist philosopher. Hanji. Match the following authors and their texts again. T. Hunt, Story of Rimini, M.G. Lewis, The Monk, Mary Wollstonecraft, Vindications of the Right of, and Mary Shelley is Frankenstein. So it is 2, 3, 1, 4. Right? The right sequence is 2, 3, 1, 4. D. Question number 101.
In which novel of Jane Austen, Elizabeth Bennet and Darcy are the central character? Yes, it is Pride and Prejudice, right? So these are the characters in Pride and Prejudice. बिल्कुल जशन बिल्कुल. Yes, हमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है. Which of the following authors belong to the Victorian period? हाँ जी. So the writer from the Victorian period is Robert Browning. Very, very right. Who is the author of The Mayor of Casterbridge? The writer of The Mayor of Casterbridge is, it is none other than, yes, the writer of The Mayor of Casterbridge is, right, Thomas Hardy. Very, very good. It's Thomas Hardy. In the poem In Memoriam is written by, the poem In Memoriam is written by, it is written by Alfred Tennyson, right? Arthur Henry Hallam. G. Arthur, for Arthur Henry Hallam. Yes, Arthur Henry Hallam. Question number 105. बिल्कुल नेहा, they are enough. They are enough, बच्चे. बच्चे, all the lectures are uploaded. हाँ जी. So, which of the following poems is written by Alfred Tennyson? It is The Charge of the Light Brigade. ये दोनों है ब्राउनिंग की, ऊपर वाली दोनों है ब्राउनिंग की, और ये आ जाती हैं कीट्स की. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 106. Which of the following poets often used dramatic monologue as a poetic technique? And it is none other than Robert Browning, right? It is none other than Robert Browning. Grammarian's Funeral is a poem written by, Grammarian's Funeral के writer कौन है? It is रॉबर्ट ब्राउनिंग. ठीक है, जिसमें उन्होंने बात करी है एक स्कॉलर की, जिसका नाम था, क्या नाम था? यस, थैंक यू गीतू. जेकोबस मिलीसियस, राइट, जेकोबस मिलीसियस. Heroes and Hero Worship is a work written by, and again it is Thomas Carlyle. Yes, it is written by Thomas Carlyle. Question number 109. Again, you have to match the following. So, Thomas Carlyle is the writer of Heroes and Hero Worship. John Ruskin is the writer of Unto This Last. Walter Pater, The Renaissance. And Emily Bronte, Wuthering Heights. So, the right sequence is 4, 3, 2, 1. Yes. Art for art's sake is a movement associated with the ideas of, it is associated with the ideas of Walter Pater. Yes, it is associated with the ideas of Walter Pater. Question number 111. Which of the following novels is written by Charlotte Bronte? So Charlotte Bronte is a writer of Jane Eyre. G. These are both written by George Eliot and Hard Times by Dickens. Yes. नहीं जी नहीं. It is Walter Pater. Heathcliff is the central character in the novel Wuthering Heights. Yes, it's the character in Wuthering Heights. Which of the following plays, novels is not written by Charles Dickens? देखो, ऊपर पूछ लिया शार्लेट ब्रॉन्टे का कौन सा नॉवल है, तो क्या हमें ये आंसर नहीं आता होगा? It is Jane Eyre. है ना? How easy they have made the things. Match the following novels and the characters that appear in them. Wuthering Heights includes Heathcliff. Great Expectations has the character Pip. जिसका नाम था फिलिप पिरिप, राइट, जिसका नाम था फिलिप पिरिप. Mayor of Casterbridge, Michael Hanchard, and Mill on the Floss, Maggie Tulliver. The right option is 4, 1, 2, 3. Right? It's 4, 1, 2, 3.
Mary Ann Evans wrote novels under the pen name. What was the pen name of Mary Ann Evans? So we all know that and we are very much sure about it. Mary Ann Evans was George Eliot. Yes. So next question is, Pip is a character in. हाँ जी, देखो ऊपर भी पूछ लिया, यहाँ पे फिर से पूछ लिया. Pip is a character in Great Expectations. जी. Definitely, Ravina, we'll have a grand party. We'll have a grand party. Wessex is the location of many novels written by. Yes. So Wessex is a location, is the setting of novels by Thomas Hardy. Yes, it's the setting of Hardy's novels. Which of the following novels is written by George Eliot? इसमें से कौन सा नॉवल जॉर्ज इलियट का है? बिल्कुल पूजा, बिल्कुल. Yes, it is Adam Bede. Very right. Question number 119. इन्होंने फिर सैमुअल बटलर वही वाला डाल दिया. ठीक है. So Hudibras is a satirical work written by Samuel Butler. ठीक है जी, it is written by Samuel Butler. Dover Beach is a famous poem. और इतना इजी देखो, मतलब इन्होंने जो अनफेमस वर्क्स हैं एक राइटर के, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं डाला, जो फेमस है उनके बारे में डाला है, जो सभी को पता होगा, है ना. सो यस, इट इज मैथ्यू आर्नल्ड. Which of the following poems is written by Matthew Arnold? इनमें से कौन सी poems जो है मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी हुई है? So it is none of the above, because the Darkling Thrush, it is written by Ted Hughes. Hudibras is written by Samuel. ओके, ऑलराइट ऑलराइट. मैं सोच रही थी, ठीक है, वो स्पेनिश जिप्सी थी. जी जी, वो स्पेनिश जिप्सी थी जॉर्ज इलियट की. स्टडी ऑफ पोइट्री इज एन एसे रिटन बाय, यस, इट्स रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड. जी, इट्स रिटन बाय, मैं कंफ्यूज हो गई ना, देखो मैं समझी स्पेनिश जिप्सी. स्पेनिश जिप्सी लिखी थी जॉर्ज इलियट ने, स्पेनिश जिप्सी लिखी थी जॉर्ज इलियट ने, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हो गई. चलिए, हाँ जी. Wives and Daughters in Everyday Story is a novel written by. Wives and Daughters in Everyday Story किसका novel है? So it was written by Elizabeth Gaskell. Absolutely correct. Elizabeth Gaskell. The Wasteland is a poem written by. So Wasteland. It's a poem written by T.S. Eliot. G. 1922. Which of the following play novels is written by Virginia Woolf? So Virginia Woolf is the writer of Mrs. Dalloway. Ulysses is written by James Joyce. Lord Jim by Conrad. Howard's End by Foster. Right? And Ulysses by Joyce. Yes. T.S. Eliot's work Murder in Cathedral is a, so Murder in the Cathedral is a, हाँ दीवू बिल्कुल, जितना पेपर इजी होएगा मेरिट उतनी हाई जाएगी. यस, इट्स अ पोएटिक प्ले और इट्स, वी कैन कॉल a verse drama. In which poem of T.S. Eliot the line "This is the way the world ends" not with a bang but with a whimper? हाँ जी, T.S. Eliot की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? This is the way the world ends not with a bang but with a whimper. It is taken from The Hollow Man. Yes, it's taken from The Hollow Man. Very right. Question number 128. Which of the following authors was associated with Bloomsbury Group? So the authors associated with Bloomsbury Group was Virginia Woolf. Right? It was Virginia Woolf. Question number 129. Which of the following novels employs stream of consciousness technique? So stream of consciousness technique is employed in Mrs. Dalloway by Virginia Woolf. Again, in which following novels Malabar Caves,
अब इन्होंने गलत लिखा है, देखो, देवर माराबार केव्स, देवर नॉट मालाबार केव्स, ठीक है, देवर माराबार केव्स, ठीक है जी। तो माराबार केव्स इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन इन A Passage to India, again by E.M. Foster, right? By Foster. T. Question number 131. Who is the author of the novel Sons and Lovers and Rainbow? Sons and Lovers and Rainbow के राइटर कौन है? Sons and Lovers and Rainbow is written by, yes, it is written by D.H. Lawrence. Absolutely right. In which continent most of the action in the novel Heart of Darkness takes place? So, the action of the Heart of Darkness takes place in Africa, Africa's Congo region, right? Africa's Congo region. Who is the author of the novel A Portrait of the Artist as a Young Man and Ulysses? So the writer of Ulysses and A Portrait of the Artist as a Young Man is James Joyce. Absolutely correct. Match the following novels and their authors. H. Lawrence, Sons and Lovers. Passage to India, E.M. Foster. Ulysses, James Joyce. Lord Jim, Joseph Conrad. So the right sequence is 3214, right? It's 3214. Match the following characters and authors that created them. Kurtz is created by Joseph Conrad. In Heart of Darkness, Professor Godbole by E.M. Foster. In Passage to India, Septimus by Virginia Woolf. In Mrs. Dalloway, Stephen Tedler by James Joyce. So again, the right series is 4123. Yes. Question number 136. Which of the following poems is not written by W.B. Yeats? इसमें से कौन सी poem W.B. Yeats की लिखी हुई नहीं है? It is Journey of the Magi. Journey of the Magi is written by T.S. Eliot. Right? Journey of the Magi is written by T.S. Eliot. Right. I know that, Rama. I am sure about it. I am sure about it. Portrait of the Artist as a Young Man maybe tha Devu. From which poem of W.B. Yeats' famous poetic line, the best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity? It is taken from The Second Coming. Right? This line, जो बुरे होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, जो गलत काम करते हैं ना उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, और जो अच्छे होते हैं उनमें कई बार कॉन्फिडेंस की ही कमी होती है. Which play of G.B. Shaw has characters Professor Henry Higgins and Eliza Doolittle? These are the characters in Pygmalion, right? These are the characters in. Bache, Septimus is in Mrs. Dalloway. Yes. Who is the author of the play The Birthday Party? The Birthday Party is written by Harold Pinter. Birthday Party is written by Harold Pinter. Question number 140. Match the following authors and their texts. G.B. Shaw, The Doctor's Dilemma. Samuel Beckett, Waiting for Godot. W.B. Yeats, The Land of Heart's Desire. And Harold Pinter, The Birthday Party. So the right series is 4, 3, 2, 1. D option is right. Right? Question number 141. Which of the following plays Didi and Gogo are the main characters? Didi and Gogo, Vladimir and Estrogen, है ना? Vladimir and Estrogen. Waiting for Godot. Who is the writer of the book Principles of Literary Criticism? So the Principles of Literary Criticism is written by I.A. Richard. Very right. Who is the writer of the critical book Seven Types of Ambiguity? So the Seven Types of Ambiguity is written by William Empson. Very, very right. What school of criticism was inspired
by ideas of T.S. Eliot and William Emerson in early 20th century. Which school of criticism was inspired by T.S. Eliot and William Emerson? So that was new criticism. Very right. It was new criticism. Match the following poets and their works. So, Stevie Smith. हाँ जी, मुझे जो याद है मैं उनके करती हूँ. ठीक है. Seamus Heaney, Digging. Philip Larkin, I don't remember. Ted Hughes is The Thought Fox. तो इनमें से कौन सा सही आएगा? Stevie Smith, Not Waving but Drowning. Philip Larkin, Deceptions. ठीक है, देखो मुझे दो आते थे, फिर भी मेरा ऑप्शन सही रहेगा, है ना? तो मैच द फॉलोइंग में ये चीजें काम करती हैं. ठीक है, आपको दो भी पता है तो आपका आंसर सही होने के चांसेस हो जाते हैं. Which of the following English poets was also a librarian? Which of the following poets were also worked as a librarian? That was Philip Larkin, right? Philip Larkin also worked as a librarian. Which of the following poets wrote about Irish national identity and women's issue? So, the poet who wrote about Irish national identity and women's issue was Evan Boland. Yes. Question number 148. What is a 14-line poem with a strict rhyme scheme called? So, that is sonnet. Yes. Poem with a 14 lines is called sonnet. What is poetic composition called in which one person talks to his listeners who do not speak but their presence can be felt? See, the questions getting repeated and repeated. It is dramatic monologue, right? It is dramatic monologue. And the last question in this previous paper, pleasurable pain. So, pleasurable pain is an example of oxymoron, okay? Because these are contradictory words. Okay? These are contradictory words. So, that is why it is called oxymoron, right? This is called oxymoron. All right. Thank you so much, everyone. We'll see you tomorrow with another two previous papers. Okay, ji? We'll see you again tomorrow with two more previous papers, and then from Saturday we'll start with the mock tests. Okay, then everyone. Thank you so much. Have a very good day. Keep learning. Just be positive. Just be, what should I say? Just relax yourselves, right? You are prepared for everything. Let it come, whatever it be. I know you are going to do good, right? Thank you so much, everyone. Thank you so much. We'll see you tomorrow. Thank you.